Ignition confirmed. Several pieces of good news for the flight events. L110 has completed its operation nominally and separated from the ongoing launch vehicle. The C-25 cryogenic engine has started its operation. L110 चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अंतिम चरण जो कि C-25 क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफलतापूर्वक प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में वह प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। +6 minutes. इसका प्रज्वलन काल करीब 640 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कक्षा की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी और अंतःक्षेपण किया जाएगा। 28.55 tons of propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. तृतीय तथा अंतिम चरण LVM3 का क्रायोजेनिक ईंधन LH2 तथा लिक्विड ऑक्सीजन पर आधारित है। यह चरण बहुत ही जटिल C-20 इंजन से बना होता है। इसमें लगभग 25 टन का क्रायोजेनिक ईंधन होता है। इस चरण का प्रज्वलन L110 चरण के बंद होने के तुरंत बाद किया गया है। यह चरण कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। The advantage of having cryo stage as upper stage is the high specific impulse of the propellant combination. Cryo stage performance normal. Having high specific impulse roughly means a lesser quantity of fuel being able to impart higher delta V or the velocity addition to the ongoing stage. +8 minutes. हर एक चरण के तंत्र विशेषज्ञ पूरी तरह रोमांचित रहते हैं जब उनका तंत्र पूर्ण निष्पादन कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Shah, Trivandrum and Bengaluru ground stations tracking in the meantime. The tracking of the LVM3 OneWeb India 2 mission is carried out through a network of ground stations of ISRO Telemetry, Tracking and Command Network, ISTRAC, along the flight path. The trajectory and separation events are ascertained through the ground stations. For this mission, Sriharikota, Bengaluru, Trivandrum, Antarctica, Savalbird and Lucknow ground stations are participating. +9 minutes. To cater to the visibility between the Trivandrum and Antarctica ground station limits, a shipborne terminal is deployed to importantly view the cryo stage operational regime and the separation of first and second batch of performance satellites. normal. For this particular mission, for about 43 minutes after the injection of the fourth batch of satellites, the rocket goes out of the coverage of ground tracking stations. In the meantime, the data of the inertial navigation system is stored on board, and when the next ground station, Savalbird, is starting to acquire the data, the confirmation of separation events and exact time and injection parameters of the separation events are telemetered. OneWeb समूह का यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्यिक समझौते के अंतर्गत यह दूसरा प्रमोशन मिशन है। इस समझौते के तहत 72 उपग्रहों को निम्न भूकक्षा में स्थापित किया जाना है, जिसमें से 36 उपग्रह LVM3 M2
वन वेब इंडिया 1 मिशन के साथ उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं और आज वन वेब इंडिया 2 मिशन में अगले 36 उपग्रहों को प्रमोचित किया जा रहा है। यह वन वेब कंपनी के लिए 18वां प्रमोशन है। इससे पहले कुल 588 उपग्रह अन्य प्रमोशन यान से पहले ही भेजे जा चुके हैं। इस मिशन की सफलता के पश्चात वन वेब कंपनी प्रथम निम्न भू कक्षा वाले उपग्रहों के नक्षत्र का निर्माण पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही वन वेब उच्च गति कम विलंब वाली वैश्विक संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। इसमें विश्व स्तर पर समुदाय, उद्यम, सरकारों को जोड़ने का यह सर्वप्रथम प्रदर्शन कर पाएंगे। न सिर्फ उद्यम बल्कि छोटे कस्बे, गांव, म्यूनिसिपैलिटी तथा स्कूल जैसी सुविधाएं जो कि दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर हैं, उन्हें जोड़ा जा सकेगा। यह मिशन न सिर्फ वन वेब के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। As we were mentioning earlier, the present mission is the second mission of OneWeb with ISRO in collaboration with New Space India Limited. The previous mission with LVM3 M2 was the 14th mission for OneWeb and first with ISRO. The 36 satellites had then been placed in 601 km circular orbit, while for the present Plus mission, 12 minutes. the intended orbit is 450 km circular. Correspondingly, the relative velocity requirement at the time of injection is higher compared to the previous mission. The present mission LVM3 M3 OneWeb India 2 is the 18th launch mission for OneWeb. वर्तमान में तृतीय Cryo stage performance normal. और अंतिम चरण प्रज्वलित है और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम उड़ान से 760 सेकंड आगे आ चुके हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 465 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Plus 13 minutes. OneWeb is a global communications network powered from space, enabling connectivity for governments, businesses, and communities. OneWeb Gen 1 satellite constellation comprises of 648 individual satellites which are placed in low Earth orbit. India's Bharti Enterprises serves as a major investor and shareholder in OneWeb. As we told, this is OneWeb's 18th launch, its third this year. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ और यह दर्शाता है कि इसरो किस गुणवत्ता से, किस विश्वसनीयता से यह तंत्र का विकास कर इनका निर्माण किया जाता है और इनका निष्पादन पूरी तरह अपेक्षित। Cryo stage performance normal. तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। For the present mission, the total burn time of C-25 is 632 seconds. Plus 15 minutes. We are 15 minutes past the launch time. Cryogenic upper stage currently thrusting.
तृतीय चरण C25 सामान्य निष्पादन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह इंजन इतना जटिल है और भारत इसमें पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। अभी अभी पुष्टि हुई, C25 इंजन को शट ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। The C25 stage thrust has been cut off and now we are awaiting the correct injection parameters for the separation of the first and second batch of Plus satellites. 16 minutes. प्रथम चरण के 4 उपग्रहों की कक्षीय स्थितियां कुछ इस प्रकार होंगी। इसकी ऊंचाई 455.5 किलोमीटर के करीब और सापेक्ष गति 7.63 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। Today's launch will bring the total number of satellites in the constellation to 618. A major milestone will be achieved with the number of satellites now in orbit, enabling the global service. OneWeb will become the first LEO operator to Plus reach 17 this minutes. milestone of being ready to roll out its global coverage. वर्तमान में तृतीय Satellite चरण injection conditions are achieved. अपनी उचित अभिवृत्ति प्राप्त करता हुआ और कक्षीय स्थितियां प्राप्त कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे प्रथम समूह के 4 उपग्रहों का प्रमोचन। Cryo stage orienting itself for the separation event of the first batch of satellites, namely 1K, 3K, 5K and 7K. 30 seconds from then, the second batch of satellites, namely 2A, 4A, 6A and 8A will be separated. Plus 18 minutes. न सिर्फ इसरो के बल्कि OneWeb कंपनी के सभी लोग बड़ी उत्सुकता से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब उनके उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिए जाएंगे। Each satellite weighs 150 kgs and the cumulative payload mass for this mission is 5,805 kgs, including the satellite dispenser. Plus 19 minutes. कक्षीय स्थितियां प्राप्त हो चुके हैं। अब कुछ ही क्षणों में प्रथम 4 उपग्रह 1K, 3K, 5K और 7K का प्रक्षेपण होगा। One K, 3K, 5K, 7K satellites are separated. और यहाँ हर्ष का पल सबके सामने प्रथम 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। अगले 30 सेकंड में अगले 4 उपग्रह 2A, 4A, 6A और 8 का अंतक्षेपण किया जाएगा। Here the LVM3 Plus 20 minutes. M3 OneWeb India 2 mission has injected its first batch. 2A, 4A, 6A, 8A satellites are separated. Visuals from the onboard camera confirming the separation event of the second batch of satellites 2A, 4A, 6A and 8A.
जी हाँ, सफलतापूर्वक द्वितीय समूह के 4 उपग्रहों को अंतक्षेपित कर दिया गया है, 2A, 4A, 6A और 8A। यह सभी के लिए बहुत ही हर्ष का पल, यह मिशन अपनी सफलता की ओर। Current altitude is 457 kilometers. These satellites will eventually be maneuvered into the altitude of about 1200 kilometers. Plus 21 minutes. 12 orbital planes cumulatively contain 588 satellites that are active. Each orbital plane has a separation of 4 kilometers in altitude to avoid collision of satellites. ऑनबोर्ड कैमरा का यह विहंगम दृश्य जिसमें हम देख रहे हैं सैटेलाइट अपनी यात्रा शुरू कर चुका है। अभी मिशन जारी है। अगले कुछ क्षणों में हम देखेंगे अन्य 4 उपग्रहों का प्रमोशन। इस दौरान तृतीय चरण पुनः कक्षा की स्थितियां प्राप्त करने के लिए उचित अभिवृत्ति प्राप्त करेंगे। अगले समूह के 4 उपग्रहों को प्रमोशन के लिए अब से करीबन 800 सेकंड। The separation events are timed apart as 30 seconds and 800 seconds between alternate batches. The first and second batch of satellites have been separated. Now we are waiting the third batch of satellites. But in the meantime, the cryogenic upper stage will reorient itself and add velocity to get ready for the next separation. The first and second batch of satellites have been injected into 455 and 56 kilometers of altitude with a relative velocity of 7.628 kilometers per second. For the next batch of satellites, the stage will go to an orbit of 469 kilometers altitude, while the relative velocity will be 7.611 kilometers per second. इस मिशन में सभी 36 उपग्रहों को 5 चरणों में उनके उद्दिष्ट कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। क्रायो स्टेज के बंद होने के पश्चात प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है। इसमें लिक्विड एपोजी मोटर्स की मदद से उचित अभिवृत्ति नियंत्रण किया गया और यान कक्षा प्राप्त करते ही अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह को प्रमोचित किया गया। अभियान द्वितीय चरण की ओर चल पड़ा है। इस कक्षांतरण में लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की जानी है और सापेक्ष गति 7.62 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त करनी है। फिर पुनः उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर यान अन्य 4 उपग्रह के समूह का अंतक्षेपण करेगा। इसके पश्चात तृतीय चरण का अंतक्षेपण प्रारंभ होगा, जिसमें 1A, 3A, 5A और 7A नामक उपग्रहों को उनके उद्दिष्ट कक्षा में 469 किलोमीटर तथा 7.611 किलोमीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष गति के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। इस घटना के
30 सेकंड के पश्चात अगले 4 उपग्रहों को जो हैं 2B, 4B, 6B और 8B, इन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। इन उपग्रहों के प्रमोशन तक हम 16 उपग्रह अपनी कक्षाओं पर स्थापित कर चुके होंगे। अब यान हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर चला जाएगा, लेकिन पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार यान अगले चरणों को, जो कि बाकी के 20 उपग्रह हैं, उन्हें प्रक्षेपित करता रहेगा और पृथ्वी के चक्कर लगाकर जैसे ही वह स्वालबर्ड स्थित भू स्टेशन से संपर्क बनाएगा, वह हमें पुष्टि करेगा बाकी के 20 उपग्रह के प्रमोशन की। We are 26.5 minutes away from past the launch time. The total mission duration of LVM3 M3 OneWeb India 2 mission is 75 minutes. तृतीय चरण अपनी अगली कक्षा के लिए अग्रसर है, जो कि 469.8 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.611 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति होगी। वर्तमान में यान की ऊंचाई 465 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.61 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Speaking about the OneWeb satellites, the payload of the satellite is a bent pipe system operating in Ku and Ka band. The forward link receives Ka band signals from the gateway via the satellite Ka antenna. The return link receives Ku band signals from the user terminals via the satellite Ku antenna. The next batch of satellites to be separated are 1A, 3A, 5A and 7A. Thereafter, the fourth batch, namely 2B, 4B, 6B and 8B will be separated. यान पूर्व निर्धारित तरीके से प्रदर्शन करता हुआ अपने मिशन को पूरा करने की ओर अग्रसर है। अब तक हम LVM3 की 5 सफल प्रमोशन देख चुके हैं। वर्तमान में यह LVM3 का 6वां प्रमोशन है। ज्ञात हो कि LVM3 M1 मिशन के साथ हमने प्रसिद्ध चंद्रयान 2 मिशन का प्रमोशन इसी यान से किया था। फिर LVM3 M2 में हमने देखा कि OneWeb के प्रथम 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रमोशित किया गया था और वर्तमान में M3 जो कि अगले 36 उपग्रहों को उनके निर्दिष्ट कक्षा में स्थापित करने के लिए अग्रसर है। LVM3 इसरो का सबसे भारी और सबसे उन्नत प्रमोशन यान है, जिसने अपनी विश्वसनीयता और दृढ़ता सिद्ध की है और आगे भी कर रहे हैं। इस वर्ष का यह द्वितीय मिशन है इसरो के लिए। इससे पहले SSLV D2 EOS 7 का सफल मिशन हमने 10 फरवरी 2023 को देखा था। We are 30 minutes past the launch time and currently the Antarctica ground station is tracking and cryo stage is reorienting itself for the third batch of separation event. A
Few seconds later, after confirming the next two batch of satellite separation, the rocket goes out of the visibility range of the ground stations. And after a gap of 43 minutes, the data will be acquired by the Saddlebirds ground station. चूंकि यह मिशन पूर्ण दक्षिणी मिशन है, इसमें शार स्थित ट्रैकिंग स्टेशंस, इसके अलावा बेंगलोर, त्रिवेंद्रम और खास तौर पर तैनात किए शिपबॉर्न ट्रैकिंग, अंटार्कटिका स्थित भू स्टेशन, स्वालबर्ड स्थित तथा लखनऊ स्थित भू स्टेशन हमें इस यान की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। वर्तमान में अंटार्कटिका स्थित भू स्टेशन हमें यान के आंकड़े प्रदान कर रहा है। "20 satellites of this mission will be separated in the non-visibility region, whose confirmation will be available much later." अभियान उचित अभिवृत्ति प्राप्त करता हुआ अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त कर रहा है। OneWeb के प्रथम पीढ़ी के उपग्रह नक्षत्र 150 केजी वाले उपग्रह के समूह हैं। अब तक 588 उपग्रह भेजे जा चुके हैं। इस प्रमोशन के पश्चात यह संख्या 618 पहुंच जाएगी। इन सभी उपग्रहों को 12 समतल प्लेन्स में बांटा गया है और यह 1200 किलोमीटर की ऊंचाई से सेवाएं प्रदान करेंगे। हर एक प्लेन में आपस में 4 किलोमीटर की दूरी बनाई गई है ताकि इससे टकराव की संभावना खत्म की जा सके। तृतीय और अंतिम चरण यान का उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर चुका है। कक्षीय स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में अगले समूह के 4 उपग्रह 1A, 3A, 5A तथा 7A का अंतक्षेपण उनकी निर्दिष्ट कक्षा में किया जाएगा। 1A, 3A, 5A, 7A satellites are separated. And we have the confirmation of the separation of satellites 1A, 3A, 5A and 7A. This completes the third batch of separation. जी हाँ, तृतीय समूह के उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है। अगले कुछ सेकंड्स में अगले 4 उपग्रह 2B, 4B, 6B 2B, तथा 4B, 8B 6B, 8B satellites are separated. Now we have the confirmation of the fourth batch of satellites. This is range operation director. 16 satellites are separated till now. Mission is continuing. Remaining 20 satellites will separate as per timeline in the non-visibility period. These 20 satellite separation will be confirmed after Svalbard telemetry station acquisition. During the non-visibility period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. All stations involved in operation shall continue in positions. Others shall reassemble at 10 hours IST. Over to Mission Director. सोलह उपग्रह प्रमोचित किए जा चुके हैं। अभी भी मिशन जारी है। अगले 20 उपग्रह प्रमोचित किए जाने हैं। कुछ समय पर इसकी पुष्टि की जाएगी। So far, 16 satellites have been injected into the orbit, 20 more to go.
Now let's join for the address by Secretary TOS Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Radhakrishnan. Mohan. Congratulations to NSIL and ISRO and OneWeb for the successful launch of LVM3 M3 OneWeb India 2 mission. As we know today, the first 16 satellites of the series are already placed in the right orbit, and now it has gone in the far south of the Earth, and we will be getting confirmation of the remaining spacecraft separation soon once the onboard storage data is acquired by our Indian ground stations. Till now, based on the observations, the vehicle has done extremely well. It went up to the right orbit and placed spacecraft at the right orbit, and also with very minimal disturbances to it. So I am very happy today for the consecutive launch success of LVM3, that is LVM3. And I want to specifically thank NSIL for bringing this opportunity to us, and also for the confidence that OneWeb India team has on ISRO for building this rocket for them for this commercial launch. I also want to thank ISRO for the wonderful work that they have done to make this rocket very reliable and rugged, once again demonstrating the capability of the rocket for placing large, heavy payloads into the right orbit without any glitch. And we look forward for greater engagement with our commercial partners for making this rocket one of the best in this class. So specifically, I want to thank the entire ISRO family, the LVM3 project team for making this historic event happen today. So let me also introduce the Chairman and Managing Director of NSIL, Sri Radhakrishnan, and also the Mission Director of the LVM3, this mission, Mr. Mohan Kumar. So over to Radhakrishnan. Good morning, and I'll share the views of Chairman ISRO, Secretary Department of Space, in congratulating the entire team ISRO for giving us this wonderful mission what we have seen. As you all know, I think having a repeat performance of any particular launcher it's not an easy thing to do. And what we had demonstrated today using the LVM3 for the commercial customer, it is extremely momentous day for us. The kind of maneuvers, one special thing what we see in this particular mission is the cryogenic stage being used for doing such a complex maneuver to meet the requirements of OneWeb in deploying 36 satellites. This is extremely challenging stuff that has been done and repeated here once again in the second mission. Now, on behalf of New Space India Limited and ISRO, we would like to compliment our esteemed customer who had given a lot of faith and belief in us and believing in our capabilities. And I would say we are doubly happy that we are part of such a big journey the OneWeb has gone through in the last 3 years. By deploying these particular satellites, I know your services are going to go global. And we are delighted that we are a small contribution to your such a long journey that you have done over several years. I would like to take this opportunity to reassure OneWeb and the entire team here that NSIL would be happy to engage in any future endeavors that would like in addition to the launch solution that we will continue to provide to your team. Thank you very much, and thank you entire ISRO team for this moment. Thank you, sir. Respected Chairman ISRO, Secretary Department of Space, dignitaries, viewers, very good morning to you all. Once again, the launch vehicle LVM3 has shown its might and ruggedness in taking heaviest payload from our soil to the precise orbit which is required by the satellite. The orbital parameters are achieved, and the 36 satellites are being deployed in a sequential manner in 9 steps of 4 numbers each. And 16 satellites are already now
we have got the data. Now once the vehicle is coming to the visibility range, remaining satellites separations also will be reported. I take this opportunity to thank the entire team ISRO, especially from the launch vehicle senders, the VSSC, LPSC, IPRC, ISTRAC and SDSC SHAR for the wonderful successful mission, and all the deliverables from all the SDAs have performed perfectly well and its intended functions were happened. And this time we have done the assembly of the vehicle in the newly built second vehicle assembly building, wherein from the nozzle trial actuation through the S200 stacking to the entire vehicle integration was carried out under one roof with utmost care and best standards of safety. And the vehicle was moved to the launch pad also through a newly built track. Every activities were smooth and safe, and we could achieve the mission in a wonderful manner. I take this opportunity to thank all the industrial partners of ISRO who are supplying the products. The uninterrupted supply of hardware and resources are key players to have the mission in the required scheduled times, and I thank all the industrial partners across India who are partners to this success. I thank all the mission executives who have actively contributed towards this mission, and my best wishes to the OneWeb team for the continued successful operations of the satellite on board. And my thanks are due to the entire LVM3 core project team for the untiring efforts of 72 days of launch campaigns. This time the record time we could complete the launch campaign in 72 days. The team LVM3, which was trained and brought up by none other than our beloved chairman. I take this opportunity to thank chairman on behalf of the entire project for being with us as a beloved patron, and sir, with your timely guidance and learned opinions made our decision making process very fast, which enabled us to complete the mission in the record time of 72 days. The key success is the robust review mechanism existing in ISRO. We have undergone all the reviews, the DRT forums, which are the primary agency to clear all the subsystems went into the mission, and FRR followed by MRR and Launch Authorization Board. I take this opportunity to thank all the chairmen and members of all review forums for the mentoring and guidance. And finally, I thank God Almighty for all the blessings in the form of the glorious success, which was the purpose of the 72 days of penance of all of us, called the launch campaign. Thank you. Jai Hind. Thank you once again, Radhakrishnan and Mohanakumar, for that feedback. And let me take this opportunity to thank once again the entire ISRO community for their work towards making this rocket one of the best in this class. And we are getting ready for the next launch campaign soon with the launch of the GSLV-3. But before that, we are also getting ready for the launch of the PSLV, which is currently going on. In April, we will have the launch of again a commercial launch of PSLV. And we are also commencing the campaign for the GSLV-2 as well. So SDSC SHAR is going to be buzzed with a lot of work for the subsequent launch missions, which will be duly announced. At this time, let me take this opportunity to thank our Honorable Prime Minister as well as the government for supporting us in making this launch vehicle available for commercial launches, because it was at a very short notice such an opportunity came to us. And we have to get ready with our required approvals and processes which were very necessary. And let me thank the approvals that are given to us for enabling this mission to take place. And it actually increased the confidence on us on this rocket GSLV-3 for
taking up the Gaganyaan, which is going to be flying on this rocket as well. So let me give you an additional information. This rocket is also having the S200 motors, which are designed with an increased margins and features which are suited for the Gaganyaan configuration. So we are happy that it performed very well in this mission. There were many more improvements in this rocket which are aimed towards making it human rated in the other stages and systems as well. So I'm very happy to see the progress incrementally happening, moving towards the Gaganyaan mission as well. So at this moment, let us retire, and then we'll wait for the remaining news about the success of the separation of the remaining 16 satellites, and that will be informed to you through media as well as social media as well as our channels. So thank you then. Till then, goodbye from SDSC Shar Sriharikota. Thank you.